Hello everyone. In this video then we are going to discuss some previous year questions of JEE Mains from the topic of rotational mechanics. Okay. So this question that we are looking at is from 2018. Now we are having an arrangement of 7 planar discs and we want to find out moment of inertia about an axis passing through this point and perpendicular to this point. First of all, can I say this is the center of mass of the system? So can I say let me calculate ICOM. So for the middle disk, it will be mr square by 2. For any one of the side disk, it will be mr square by 2 plus this distance will be 2r. So this will be 4r square. We have 6 disks like this. If you solve this, you will get 55 mr square by 2. This is ICOM. Now distance between O and P is 3r. So can I say I about P is ICOM plus total mass of the system, that should be 7m, into distance ka square. This is parallel axis theorem. So IP then will be ICOM plus this will be 63 mr square. IP then will be 181 mr square by 2. So the required answer is option 4. Okay. First we calculate about center of mass and then we use parallel axis theorem. This is how you should solve this particular question. Now this question again is from JEE Mains 2018. It says there is a circular disc and from this disc a small disc has been removed. I want to find out moment of inertia of the remaining disc about an axis perpendicular to the disc and passing through the center. So I'm saying, can I say I'm looking for this kind of situation? Moment of inertia of complete disc minus moment of inertia of the removed part about center. This is what we are trying to calculate. If mass of this is 9m, can I say for a disc mass is directly proportional to radius square? Yes or no? क्योंकि आप मास को ऐसा लिख सकते हैं, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया. तो चूंकि सेम मटेरियल है तो मास पर यूनिट एरिया सेम होगा, पाई सेम होगा, तो m इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. तो इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r बाई 3 है, तो अगर इसका मास 9m है तो ये रिमूव्ड पार्ट का मास m रहा होगा. करेक्ट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस about its center will be 9m r square by 2 mr square by 2. Moment of inertia of this will be, पहले तो m इसके खुद के सेंटर के अबाउट निकालो तो वो होगा m इंटू इसके रेडियस का स्क्वायर का हाफ प्लस उसको फिर पैरेलल एक्सिस से यहाँ ट्रांसफर करना है, तो अगेन मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 2r by 3, तो उसका स्क्वायर कर दो. तो ये जो I2 है ये I2 हो जाएगा, प्लीज चेक कौन. तो I2 हो गया mr स्क्वायर बाई 2. कैन आई से नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी I1 minus I2. It is then this is 4 mr square. That matches with option A or 1. Right? So this is how you can go for bodies having cavity. टोटल बॉडी का कैलकुलेट करके जो कैविटी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्सट्रैक्ट कर काम बन जाएगा. ठीक है. Now this question is from JEE Mains 2017. Okay. So in this question I have this kind of a cylinder
I want to find moment of inertia about this perpendicular axis, right? So if I take this as origin, this will be L by 2, this will be minus L by 2. Say density of this material is rho. Okay. And say this radius is R. Okay. Now, I know total mass can be written as this. Density is constant, mass is constant. What I am doing is, I am differentiating this entire thing with respect to L. So this is 0. Rho pi is a constant. Differentiating with respect to L will give me this. From here, if I get the value of dr by dl, I think that should be minus r by 2l. This will be utilized, okay? Let me keep this. At a distance of x, say you consider a disk of dx. First of all, for that segment, mass will be density into pi r square into dx. Correct? Right? So can I say moment of inertia about the given axis will be, पहले तो इस डिस्क के खुद के एक्सिस के अबाउट अपना एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट विल बी dm into r square by 4, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से उसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, राइट? ओके ओके. di axis, can I say this is nothing but m by l into dx? So I put if I integrate, I will get the complete result. Let me integrate. Limits will be from minus L by 2 to plus L by 2, from minus L by 2 to plus L by 2. The total axis moment of inertia about the axis will be, differentiate the, integrate this, you will get the first term as mr square by 4, plus if you solve the second bracket, you will get it as mr square by 12. From now onwards, I am simply going to call it as I. That is the I we are going to minimize. Okay, this I we are trying to minimize. So can I say to minimize I, say I am using di by dl equal to 0. So if you do di by dl in this equation, this is the result. So di by dl, क्या dr by dl के जगह minus r by 2l लिख सकते हैं? और जब इसको मिनिमाइज करना है तो इसको 0 से इक्वेट करना होगा. You can get this. अगर इसको हम रीअरेंज करें तो मेरे को मिलेगा L square by r square is equal to 3 by 2. So ratio of L by r will be root over 3 by 2. Hence if you look at the options, it matches with option 1 then. Right? Okay. The next question then is from JEE Mains 2017 paper. Now in this, it is given that the rod is pivoted here. It's a uniform rod. It's pivoted here. And when it makes an angle theta as shown, we have to find out the angular acceleration. So first of all, I need to draw the FBD. So if I draw the FBD, this is the pivot.
mg will be this. So if this is mg, this angle will also be theta because this angle is theta. So can I say this is mg cos theta, this is mg sin theta. There will be hinge forces. So this is the vertical component and this is the horizontal component. What those values are or what those directions are, I don't know. I have assumed them. अगर FV पॉजिटिव आया तो मतलब डायरेक्शन सही है, FH पॉजिटिव आया तो डायरेक्शन सही है, राइट? I want to find out the angular acceleration of the rod, है ना? Masses are capital M. So I'm saying, let's take torque about this point P, pivot P. So torque of FV will be 0, FH will be 0, mg cos theta will be 0. Torque will be mg sin theta into L by 2. यूनिफॉर्म रॉड है ना, तो सेंटर ऑफ मास मिडिल पे होगी. दिस टॉर्क अबाउट पॉइंट P कैन बी रिटन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P into alpha, and from here I can get alpha as 3g sin theta by 2L, right? Actually L here was small l, so everywhere you can just replace by small l, and hence the answer to this question then will be option 1. Now this question then is from JEE Mains 2016. You can see in this, if I want to find out angular momentum from A to B, the magnitude can simply be found by doing a v vector डायरेक्शन लाइन में लगाओ और ये आपका r परपेंडिकुलर होगा. r परपेंडिकुलर आपका हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है एंड दैट विल बी r by root 2. तो आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा m into v into r by root 2. और अगर आप r क्रॉस v करते हैं किसी भी पॉइंट पे तो ये r वेक्टर होगा, r क्रॉस v वो हमेशा माइनस k की तरफ होगा. तो ये आपका a से b में हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट, जब आपको B to C जाने के समय देखना है तो आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर O से लाइन पास कराएं तो उस ट्रैजेक्टरी पे किसी भी समय R परपेंडिकुलर जो होगा, इट विल सिंपली बी दिस डिस्टेंस A प्लस दिस डिस्टेंस विच इज R by 2. सो मैग्नीट्यूड विल बी और किसी भी समय अगर आप वहां पे r क्रॉस v करते हैं तो r क्रॉस v इस सेंस में होगा, दिस इज पॉजिटिव के, राइट? दिस इज फ्रॉम B to C. इफ यू गो फ्रॉम C to D, अगेन along the direction of velocity create a line. This is the r perpendicular now. It will be again A and this will be r by root 2. So again this LCD will be और किसी भी जगह पे अगर r क्रॉस v करोगे तो r क्रॉस v will come out of the plane. So positive k. L D to A, कुछ नहीं, फिर से वही काम. देखो ध्यान देना, इस वेलोसिटी के अलोंग बनाओ तो अब ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम. सो दिस विल बी r by root 2. तो आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा mv r by root 2. और आप किसी भी पॉइंट पे अगर ले जाके r क्रॉस v करते हैं, क्योंकि v नीचे की तरफ है, तो r क्रॉस v विल बी इनटू द प्लेन, सो दिस विल बी माइनस k. अब चेक करो कौन कौन सा गलत है. A to B वाला सही है लेकिन C to D वाला गलत है. हमारा A प्लस r by root 2 आया था, वहाँ r by root 2 माइनस A लिखा है. तो इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना है तो ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है. D to A में भी देखो क्या हुआ है, हमारे पास माइनस के आया था, यहाँ पे प्लस के दिया हुआ है, तो ये भी इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे दो ऑप्शन इनकरेक्ट था, ठीक है? इट विल बी ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4. फाइन. से दिस हाइट इज h, this is r. At a distance of y, say I consider a
length of dy. Okay, let density of cone be rho. So can I say, if you get this radius, say small r, from similar triangles I can say y by r is equal to h by capital R. So small r will be yr by h. Important. So the small dm mass will be pi r square into dy into density. So dm will be rho into pi instead of r square. So this then becomes okay. So we have dm. Total mass will be nothing but density into volume of this cone. This much. Now YCOM will be अगर आप वैल्यू पुट करें और लिमिट होगा 0 to h. So YCOM rho pi r square by h square y cube dy 0 to h m की जगह लिख देते हैं. You will find out these terms are going to cancel out, right? और यहां से आपको मिलेगा this is YCOM. So YCOM then is so from the vertex it should be 3h by 4. So if you look at the options, then it will be 3h by 4. Okay. Now, for the largest cube, the body diagonal of the cube should be equal to the diameter of the sphere. So A will be equal to 2r by root 3. Can I say density will be so density is, therefore mass of the cube is density into volume. Volume will be A cube, hence this. So mass of the cube will be this, then will be moment of inertia of a cube of a given mass about an axis perpendicular to one of its faces passing through center. That is, so where m is the mass of the cube, so this time it is this much into 1 by 6. A square will be, so I will be equal to 4 by 9 root 3 mr square by pi. That matches with option 3. That matches with option 3. Okay. This question is from JEE Mains 2014. So the situation is like this. It is moving in a horizontal circle like this. Okay. I'm going to define 3 vectors. K cap,
AT vector tangential and AR which is radially outwards. तो अगर हम ये वेक्टर को L वेक्टर माने तो वो दो वेक्टर से बना हुआ है. Say this angle is theta. So it is made up of these two vectors. This is L cos theta. This is L sin theta. तो हम ना L वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं. L cos theta minus k cap plus L sin theta AR cap रेडियली आउटवर्ड से. वेलोसिटी वेक्टर तो हमेशा टेंजेंशियल ही होगा और हम एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं. से लेट दिस लेंथ बी स्मॉल l और r वेक्टर. ओके, एंड दिस लेंथ इज स्मॉल l to avoid confusions. So angular momentum will be m r cross v. So I will write m. This is r vector. This is L. This is L. So L cos theta minus k cap plus L sin theta cross V AT cap. अब देखिए, L cos थीटा चेंज नहीं करेगा, k कैप और AT के बीच का एंगल चेंज नहीं करेगा. सिमिलरली L sin थीटा और V चेंज नहीं करेगा, AR और AT के बीच का एंगल चेंज नहीं करेगा. So can I say magnitude of this is going to remain same? बट क्या होगा, चूंकि ये AR और AT चेंज करते रहेगा तो कहने से अकॉर्डिंगली डायरेक्शन चेंज करता रहेगा. सो L विल चेंज इन डायरेक्शन. Hence the answer will be angular momentum changes in direction but not in magnitude. Right? Correct? ठीक है ना. k कैप और AT के बीच का एंगल चेंज नहीं करेगा क्योंकि AT XY प्लेन में है, k कैप उसके परपेंडिकुलर ही रहेगा. AR और AT भी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहेगा. तो इसीलिए मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो सेम रहेगा, लेकिन सर्कल के साथ साथ AR AT का डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, इसलिए इस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज करता रहेगा. राइट? This question is from JEE Mains 2014. Now if I consider FBD, since it is hinged, some vertical component, some horizontal component, mass m, radius r, it's hollow. So say angular acceleration is alpha. For this mass, this is tension T, this is mg, say linear acceleration is a. तो अगर इसका linear acceleration a है तो इसका भी acceleration a होगा. तो डिस्क के इस पॉइंट का acceleration which is alpha r, for no slipping a and alpha r should be same, correct? So for no slipping, a equal to alpha r. This is the first condition. If I write torque about point O, torque of FH and FB will be 0. टेंशन का टॉर्क आएगा और उसको हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. चूंकि हॉलो है तो रिंग की तरह बिहेव करेगा. यहां से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा T/mr. अगर हम इस ब्लॉक की बात करें, mg minus t is equal to ma. This is third. I have three equations and I have three unknowns. The three unknowns are a, alpha and t. So three equations, three unknown, we should be able to solve. Correct? Let us consider. Can I say, if I see this alpha r is T/m, and can I say this alpha r is nothing but a, so t can be substituted as ma. So I can write
From here you will get A as g by 2. So can I say the acceleration of the mass falling down will be g by 2, option 1. Fine. We'll come up with more PYQs in next videos then. Thank you everyone.